फीमेल फ्रेंडशिप्स का जो एक टॉपिक है आई थिंक इस पे बहुत कम बात की जाती है, इवन दो इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर रिलेशनशिप इन योर लाइफ दैट एग्जिस्ट, एंड इट्स ऑल्सो द मोस्ट मिसकंसीव्ड रिलेशनशिप. Asra, a Karachi girl, shares how she has come to cherish her female friendships and how she has unlearned stereotypes. On a scale of 1 to 10, how would you rate your female friendships? How deep do they go? Are they about the latest shows on Netflix or honest 3 a.m. conversations? To be honest, I really don't mind confessing that I've always been that girl that has a lot of guy friends in the circle. Even though मैं एक all girls school में गई हूँ, वहीं पे मैंने पढ़ा है, I've spent quite a lot time with a lot of females around me, I still had always got a group of friends dominated with males. Even though I genuinely enjoyed these male friendships, I'm not saying कि वो किसी भी तरीके से मुझे toxic लगती थी या कुछ लगती थी, but I always thought that I'm missing out something in life, because I think the sense of support and connection that females bring in your life is actually very very different as to what male friendships give you. I did have a lot of trouble clicking with girls back in school life, in university life, but now I think जब मैंने वाली age cross कर ली है, I've come on to a more mature age. I do have a lot of strong females in my group now, who I'm actually really really proud to call my friends. And now trust me, जब मेरे पास वो ज़िंदगी में अब ये वाली एक female connections हैं, I actually think कि यार what would I do without them being there? Because that connection, that support, I think it's highly commendable and it cannot be compared with your male friendships. And I think I would rate these friendships 9 on 10, क्योंकि ये वही फीमेल फ्रेंडशिप्स हैं जो कि मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट मेरी हर नीड पर खड़ी हुई होती हैं, एंड द लेवल ऑफ एम्पैथी दैट दीज पीपल ब्रिंग इन माई लाइफ, आई थिंक वो सपोर्ट आपको कोई भी नहीं दे सकता, बिकॉज दीज फीमेल्स आर द वंस हु हैव एक्चुअली वेंट थ्रू द सेम थिंग्स दैट यू हैव बिन थ्रू. As a single woman in her late 20s in a South Asian society, what role do female friendships play in your life? फर्स्टली आई थिंक कि जो आपकी लेट 20s और अर्ली 30s वाली जो एज होती है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेस इन योर लाइफ, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, दैट टू सिंगल वुमेन, आई थिंक, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ टर्मोइल कि आपको करना क्या है. लाइक यू वांट टू एक्सेल इन योर करियर, डू वांट टू सेटल डाउन, स्टार्ट अ फैमिली ऑफ योर ओन, लाइक व्हाट आर यू सपोज टू डू? आई मीन बिकॉज आपके जो सराउंडिंग में जो आपके लोग होते हैं, मेल्स और फीमेल्स, एनी जेंडर, डिस्पाइट द जेंडर, आई बिलीव कि वो लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं डिफरेंट, एंड यू आर लाइक कि मैंने क्या करना है, लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दिस पर्टिकुलर एज. आई थिंक आपकी जो फीमेल फ्रेंडशिप्स होती हैं, दे एक्चुअली नॉक अ लॉट ऑफ एम्पैथी इनसाइड यू. जैसे आई ऑलरेडी प्रीवियसली टोल्ड यू दैट एक एम्पैथी, सेंस ऑफ एम्पैथी आपको आती है फ्रॉम 2 sets ऑफ ऑडियंसेस जो आपकी फीमेल फ्रेंडशिप्स में आपको दिखती है. एक वो वाली फीमेल्स होती हैं जो कि ऑलरेडी ये वाले फेजेस गो थ्रू कर चुकी होती हैं, दे हैव ऑलरेडी सेटल्ड डाउन और दे हैव ऑलरेडी एक्सेल्ड इन देयर करियर, दे हैव चोजन अ पाथ फॉर देमसेल्व्स. आई थिंक दे कम इनटू योर लाइफ एंड दे टेल यू कि दिस इज़ हाउ यू वांट टू डू दिस इज़ द these are the footsteps that you need to follow. एक सेट ऑफ ऑडियंस आपकी फीमेल फ्रेंडशिप्स की होती है जो आपके साथ ये चीज़ गो थ्रू कर रही होती हैं, and those female friendships actually bring that in it with you kind of a feeling for you, I think. And I think that both of the female friendships are very very important in your life, and it knocks a lot of sense of survival into your struggle. And that's why I think that living in a society, especially you were talking about South Asian society, which brings a lot of expectations for brown women out there, I think ye wali friendships actually become a lot more important than you actually think about. What is your response to statements like, "You're not like other girls"? Has it changed over time? आई थिंक इस तरीके के फ्रेजेस हम लड़कियों ने हमेशा से सुने हैं. लाइक ऑल आवर लाइव्स वी हैव बीन ग्रोइंग अप टू लिसन टू सच काइंड ऑफ फ्रेजेस, राइट, जिसमें आई थिंक कि हमें कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी करते थे तो उसमें हम लोग को ये वाली चीज़ बोली जाती थी कि ओ माई गॉड, यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स, राइट. उस वक्त व्हेन वी वर इन स्कूल एंड कॉलेज एंड वी वर प्रॉब्ली टीनेजर्स और समथिंग, उसमें हमें ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लीमेंट टाइप की लगती थी कि यार हमारी कोई तारीफ़ हो रही है या हमारे बारे में कुछ अच्छा बोला जा रहा है और हमें एक क्राउड से स्टैंड आउट करवाया जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स उस एज और उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा फील कराया करती थी. लेकिन एज यू ग्रो अप यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यार दिस सेंटेंस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक.
I have grown up with such kind of phrases कि you're not like other girls, oh my god, you're more stronger than I expected a woman to be, and things like that. I have grown up to be like that. तो hence I think I started to live with this phrase, जिसकी वजह से I think उसका result ये हुआ कि मैं बड़ी tomboyish type की हो गई in my school life and my university life. If you look at me, I'm more like a tomboy person. I made a lot of male friends because of that very reason. As I already told you, I did not click much with female friends, right? So, लेकिन मैं जब अब mature age में आई हूँ, I started to realize कि यार this just made me a little, you know, away from the feminine inside me. Why this phrase? If I'm doing something extraordinary, if I'm doing something different as to what a routine tells me to do, why does it make me non-feminine? Why does it make me stand out of crowd? So now I do find this phrase very, very problematic, to be honest. I feel that it's very stereotypical and it just makes me feel that I'm just standing against the whole other lot of women out there. And to be honest, मुझे वाला competition रखना ही नहीं है women से. So stop making me stand against a contest against another woman, right? And I don't want to be a part of it. So मुझे एक्चुअली ये सवाल पूछना है उन लोगों से जो आके ये वाली चीज़ बोलते हैं कि यू नॉट लाइक अदर गर्ल्स. मुझे ये सवाल पूछना है उनसे कि यार आप किन लड़कियों से हमें मिला रहे हैं, मतलब हाउ मेनी वुमेन डू यू नो आउट देयर जिनसे आप हमें मिला रहे हैं, या वो कौन लड़कियां हैं जिससे आप हमें कंपेयर कर रहे हैं. सो स्टॉप मेकिंग अस फील एज इफ वी आर इन अ कॉन्टेस्ट, वी स्टैंडिंग इन अ कॉम्पिटिशन एंड वी आर competing with one another. Stop making us feel like that. I think it's 2022. We cannot take this BS anymore. We're in 2022 now. The world is getting more inclusive and female representation is on the rise. Do you feel there is a pressure to support women even when they are at fault? Yes, I do believe that the pressure exists. और इसकी I think बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें ये फील होता है as a woman कि अगर हम किसी भी औरत की गलती को हाईलाइट करेंगे तो हमें बहुत बड़ा एक बैकलैश फेस करने को मिलेगा. The inclusivity and the representation that the women are getting right now, आई थिंक जो हमें थोड़ी बहुत मिलना शुरू हुई है वो सालों की मेहनत है. हमारी जनरेशन ने बहुत मेहनत की है, हमसे ऊपर वाली जनरेशन ने बहुत मेहनत की है, उससे पहले वाली जनरेशन ने भी उस पर बहुत मेहनत की है. सो दिस इज़ अ स्ट्रगल ऑफ डेकेड्स. वी हैव ऑलवेज वाउच्ड फॉर इक्वालिटी. सो इफ़ यू हैव वाउच्ड फॉर इक्वालिटी, सो दिस कॉल्स फॉर नो प्रेशर ऑन कॉलिंग आउट वुमेन एज वेल. हमारी आजकल की औरतें बहुत वोक होती जा रही हैं. दे कैन कॉल आउट वुमेन एट एनी टाइम ऑफ द डे. दे से कि भाई आपने मुझे यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील कराया है, आपने ये चीज़ गलत की है, यहाँ पे आपने मुझे डिमीन्ड फील कराया है, यहाँ पे मैंने हरास्ड फील किया है, एट्सेट्रा. नाउ वी हैव स्टार्टेड टू से दिस टू मेन. व्हाई कांट वी पॉइंट आउट द फॉल्ट्स इन वुमेन एज वेल? If we do expect equality from our surroundings, I think we should start from our gender as well. What is the one thing you want to tell 10-year-old Asra who grew up with Bollywood movies? We all have grown up watching these movies. अगर मैं specifically बात करूँ 80s और 90s के generation की, I think उस ज़माने में Bollywood movies were pretty popular. The biggest disagreement that I have with these movies is the wrong portrayal of relationships. भले वो प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स हों या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, हमेशा से उसकी एक अच्छी साइड दिखाई जाती थी. They did not show us that how all other relationships comes with a lot of expectations, ups and downs, breakups, patch-ups and sometimes heartbreaks, even between friends. और क्योंकि हम लोग ये देखते हुए बड़े हुए हैं तो हमें एक रियलिटी नहीं पता थी रिलेशनशिप्स की. तो when we entered into a more mature age, we got a lot of reality checks. So the advice that I want to give my younger self is that ke invest in the right kind of people and people who actually boost you instead of pulling your energy down. Because to be honest, one lesson that I have learned, that friends are actually very important to make you survive the struggles of life.